हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। आज का व्लॉग एज अ टाइटल सजेस्ट आपको मैं ले जाने लगी हूँ अपने साथ बनारस में। सो आई एम गोइंग टू टेल यू वेयर एग्जैक्टली टू शॉप, कहाँ से क्या खरीदें, शादी की शॉपिंग, बनारसी साड़ियाँ, बनारसी दुपट्टे, सूट फैब्रिक्स एंड सो मच मोर, मोस्टली फैशन ओरिएंटेड इन एंड व्हाट टू डू इन बनारस ओवर अ वीकेंड ट्रिप। सो स्टे ट्यून बिकॉज बहुत कुछ रिकॉर्ड करना है, फ़ोन की बैटरी बचानी है और हम एक बहुत ही कूल सी ट्रक में एक प्राइवेट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स सारे ट्रैवल कर रहे हैं। सो आई एम होपिंग इट्स गोना बी ग्रेट फन। फाइनली हम बस में सीटेड हैं एंड वी आर ऑन अ वे टू बनारस। सो फिलहाल वो पिकनिक टाइप सारा सामान निकलेगा। मोर पीपल, या सो स्टे ट्यून। ये मैं हूँ और यहाँ We're on our way अभी about 50 kilometers और 50 odd kilometers left to hit बनारस now. हम पहुंच गए रेडिसन होटल के रेस्टोरेंट में। अरे सुंदर बालिकाएं, कन्याएं कुछ कुछ तैयार हो रही कमरे में चेक इन करने से पहले। और ये हमारे अनइनवाइटेड गेस्ट है, ये हमारे ये लेडीज वॉशरूम के आगे खड़े होके खप मचाने हैं। That's अनुपमा है ना, ये ब्लॉग है तो हम आपकी डिटेल्स नहीं दे सकते, बट सुपर कूल एंड लगना चाहिए ना, लॉट्स ऑफ फन अवेटेड। वीडियो आएगा जल्दी। अरे इतना पैसे खर्चे चश्मे खरीदने में, फ्री का है यार, ये मेरे ब्लॉग में जाएगा, ठीक है, वीडियो है ये। ओके, सो वी मेड इट टू द होटल। It's beautiful. That's the chandelier. And I'm going to show you a beautiful artwork that I just spotted. So from the hotel we directly left for the market because Banaras 8:30 बजे के बाद बंद हो जाता है and it was a Saturday, तो संडे को मोस्टली शॉप्स शट रहती हैं। सो हमने बिना टाइम वेस्ट करे, बिना रूम में चेक इन करे, होटल के बाहर से 2 ऑटो पकड़े जिसमें सारी लेडीज़ लोड हो गई टू स्प्लर्ज। हेलो, वी आर ऑल इन ऑटो, 2 ऑटोस, ऑटो की सवारी। We're off to do साड़ी shopping spree, बनारसी stuff. Stay tuned. We are headed to the market. That's the guy who's leading us. अब हम जा रहे हैं वेंडर की दुकान में, पूरी की पूरी टोली। ऐसी रेंज में दिखाओ 5000 वाली। ये अच्छा लग रहा है। देखिए पिंक का खींचना तो मैं नीचे वाला पिंक दिखाओ। दुकान में भी हटा दिया क्या? नहीं, मैं तो वीडियो को देख दिखाओ। मैं अच्छा वो प्लेन का पीछे से वाली हाँ, वो अच्छा तो लगा मुझे पिंक। दुपट्टे से तो बच बैठो। Since we spent most of our time sitting in the shop, we were fed this famous Banarsi chura. It was like a fried poha, very tasty. All the things that you see on the screen are the fabrics, and these are some sarees. These sarees are like those raw mango designs and Ikaya inspired, or however you want to put it. Pure handloom cotton silk sarees.
worth 15k, something that you'll probably get online for 35,000. Also these fabrics, we picked so many of these. This one is in purple, it was for 800 rupees per meter. This sari one of our colleague ended up buying, and it was so beautiful for his bride to be. That sari that you see in mustard, it was a favorite in the group. It is in mustardish mehendi color. Again, beautiful raw mango kind of design. And the prices, guys, you believe, I mean, they're unbelievable, because the Banarsi is not a cheap, very reasonable item. Obviously, depending on the fabric that you're choosing. So, for example, these are all pure cotton silk kadwa work. So these are all expensive. But if you are to compare them to your online retailers, it's a crazy amount of difference. This is the Deepika Padukone dupatta, and then you have these full jal dupatta. These are some Georgette sarees, beautiful and stunning work in so many beautiful colors. By the way, this is that famous tomato chaat from Banaras. Again, because इतना बड़ा damage हुआ तो दुकानदार ने हमें सब free में खिलाया. सो वी गॉट अ स्टफ़ मच लेटर. हम सब साथ लेके नहीं आए थे, क्योंकि बनारसी सामान को वो पॉलिश करके भेजते. ये कुरियर में आया था, सो आई डिसाइडेड टू डू अ क्विक कॉल हम सभी की शॉपिंग का. You saw a red sari, then this is a beautiful sari in matka silk, a very different version for a Banarsi sari. These are fabrics. That sari was for 16,000, I believe. These fabrics are 800 per meter. They are so beautiful to make suit, kurta, sharara. मैंने actually एक fabric का शरारा बनाया है, which I probably will use in some other video. This is in black, and then you have these very beautiful dupattas also underneath in ivory color. Again Banarsi, and this is on silk. So guys, I think there were some items which are very exclusive and nice, and then you had this affordable range also, which was equally beautiful. But then all of us, we were looking for exclusive kind of items, and we were happy that we ended up getting it. Though our expectations were much more, but since we did not have time also to explore around this one shop, we're pretty much satisfied with now that we have seen our stuff. So this is a dupatta in the range of 2500. Now this is a beautiful sari in matka silk, something similar to the one that you saw previously, लेकिन इसमें all over work नहीं हो रखा है. It has beautiful border and a stunning pallu. So again, very exclusive and very uncommon kind of sari. It has a very beautiful pallu, so this is a little glimpse of the palla that's there. Then you have this pure cotton silk dupatta. It's in dual shade. It's so beautiful. I will open it and show it to you. So this is dual shade, like I mentioned. It has this beautiful touch of cobalt blue and I think sea green. I think under the light, and look at this border. It's all hand woven. It's all handloom stuff. And it has that gold and silver Banarasi, Suraj Chand jisko kehte hain, and it's so stunning, guys. And the person who bought it is actually going to pair it with that white Banarasi fabric that you can see underneath. This is what she has paired it up with, and I think it's a great combination. This kurta will look so amazing. So she's bought a whole suit set material. Again, I think that's for 800 per meter. Then this is another purchase in wine. So these fabrics are what I think we all absolutely admired the most. And then these are sarees in organza tissue. These are in the more affordable range, I believe 3500 4000 के करीब की थी ये साड़ियाँ. And they have this beautiful Banarsi border, both in grey. So I think somebody got these for gifting. But lovely, summer wear. And now also I'm going to show you more collection. So another person bought this dupatta. I mentioned this is for 2500 range ka. So this is a full suit set, a 3-piece suit set. It's a great option for gifting or for some festivities. This I believe was on Georgette. And this fabric, oh guys, just look at these colors. These sea greens, this teal color. This is in teal, and it has this motif also in copper and silver. This is a beautiful dupatta in rust orange shade. And the sari that you saw the lady wear, the mehendi mustardish color, it's this sari. Absolutely stellar. This was I think for 16,000, 16 and a half. And beautiful motif, such a stunning pallu, worth it. This is again a fabric that I purchased, जिसका मैंने शरारा बनाया है. It is again dual shade. It's magentish blue, if that's a color. It's royal blue and purplish actually. And this is in charcoal grey. So I think a friend of mine is going to make a sharara in this and pair it up with a pink Banarsi dupatta. So again, it's very pretty, and this has a champagne color booty. So I bought a fabric और मैंने उसका दुपट्टा बना दिया. So these guys, they also make this धागे के tassel and jal
to finish any dupatta. So this is my second dupatta that I purchased from a fabric, and I love the color. It was coral, so it's pinkish and red, will go with so many more Indian wear. Next saree that I'm going to show you is this beautiful, again, matka silk. I think it was a very popular fabric amongst all of us. So this is all silver zari, and it has this beautiful colored flowers all over. Jal hai ye pura. It was so beautiful. Now this is that 2500 rupees wala dupatta, and I think I wanted to open and show how beautiful border did it have, and this color was to die for. If only someone else would have not bought it, I would have taken it. Hi guys, so now we are headed to the ghat. आज का बहुत बड़ा प्रोग्राम था. कभी हम जा रहे थे सुबह सारनाथ, कभी हम जा रहे थे काशी विश्वनाथ, कभी हम किसी और टेम्पल में जा रहे थे, बट देन our plans got stalled. So finally I think what is happening is that we are going to one touristy spot followed by Aarti in the ghat, which is what I'm so looking forward to, and I think that is what one must do while you're in Banaras. So it's going to be my first time, and I hope I am able to get some nice visuals, some nice photos, which is also why this Desi Avatar. So while I waited for everyone at the lobby, I decided to do a little preview of the Radisson Hotel. बहुत ही बढ़िया होटल है और मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं ये बोलने के लिए, मैंने बाकायदा पैसे दिए हैं. बट इट वॉज अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी वाराणसी में, एंड प्रॉपर 5 स्टार एक्चुअली इफ़ यू आस्क मी. थोड़ा छोटा है बट द रूम्स वेरी नाइस, कंफर्टेबल. सारे रूम्स में बाथ टब्स थे. लॉबी वॉज वेरी नाइस एंड फूड वॉज वेरी गुड. ये हम हैं, ये हमारी बिंदी है और ये हम संस्कारी हो रहे हैं. We left no stone unturned to do the party हो रही है, but now we are on our way to the Varanasi Ghats. So ये रास्ता पूरा चांदनी चौक की याद दिलाता है दिल्ली वालों के लिए स्पेशली. आपके लेफ्ट राइट पे दवा के दुकानें हैं, दवा के भीड़ है. सो आई वॉज जस्ट क्लचिंग ऑन माई बैग, मेकिंग श्योर माई मास्क वॉज ऑन मी ऑल द टाइम. और ये फुटेज मैं लेना चाहती थी क्योंकि मेरी खुद की कोई फुटेज थी नहीं. सो दिस इज़ द एंट्री टू द मेन घाट. दशवमेश घाट बोलते हैं इसे. सो इस घाट से आप एंटर करते हो, एंड यहाँ पे आपको बोट्स मिल जाती हैं. हमने ऑलरेडी टाई अप कर रखा था सब, सो दैट इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ क्यूज़ फॉर अ लार्जर बोट फॉर द बिग कंपनी दैट वी हैड. और हम पहुँच गए हैं बनारस की घाट पे. इन ऑल ऑनेस्टी आई यूज्ड टू थिंक कि बनारस की घाट और घाट की आरती बहुत ही ओवर हाइप्ड है, बट एक बार आप वहाँ पहुँच जाओ, द वाइब, द एनवायरनमेंट, इट्स सो डिफरेंट, इट इंट्रीग्स यू. एक अंदर स्पिरिचुअल तार हिट हो जाती है, बट मोर देन दैट एवरीथिंग इज सो सरियल, सो ब्यूटिफुल दैट यू वांट टू बी देयर. एंड फाइनली द बोट हैज स्टार्टेड गाइस, बट द फेवरेट बैकग्राउंड दैट आई हैव टू शो. बाय बाय वाराणसी वाला पोर्शन ले रहे हैं.